तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, फिट हैं, खुश हैं, मज़े में? उम्मीद करता हूँ वीवीआईपी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम बढ़िया। आज गेम नहीं खेलेंगे भाई, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हेलब्लेड सेनुआ सागा को और हेलब्लेड सेनुआ सैक्रिफाइस दोनों को। और जो इसमें वीडियो फीचर अवेलेबल है साइकोसिस के ऊपर, उसकी मदद से, और द स्टोरी सो फार, मतलब हेलब्लेड 2 के स्टार्ट से पहले जो स्टोरी थी मामला, टू मेक इट मोर एक्सप्लेनिंग, पहले मैं इसे प्ले करूँगा, 5 मिनट की ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम जो है इस रियल वीडियो पे जाएंगे कि साइकोसिस क्या है, रियल कैरेक्टर से भी आप मिलेंगे और बहुत कुछ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए, पहले तो भाई शुक्रिया मेरी इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए और बेहतरियों के लिए तजावीज़ देते रहा करें। लेट्स कंटिन्यू। Senua, the outcast who became a warrior, who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul, has accepted the voices, the furies, as part of herself. Just like her mother Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father Zinbel told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela, face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries, until she found her prize before the guardian of hell's gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped, not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release.
But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अभी हमारे माशरों में भी होता ही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी होता है कि कुछ लोगों को मनहूस कहा जाता है। तो प्लेग आई इनके इलाके में, जहाँ भी ये थी, नॉर्थ में कहीं पे थी, नॉर्थ के आसपास ही होंगे। तो उस प्लेग में सब इसके जो बहुत सारे लोग मारे गए, उसका ज़िम्मेदार इसे ठहराया गया, इसकी नहुसत को ठहराया गया। इसके बाप ने इसे खारिज कर दिया। और इस दौरान जब ये वहाँ से निकली हुई थी, वाइल्ड्स में थी, तब इसके गांव पे हमला हुआ और उसमें इसका शौहर मारा गया, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, डिलियन। फिर अब साइकोसिस क्या है वो तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसने उसका सर उठाया और ये एक तरह से सोचती थी कि उसे रिवाइव कर देगी, और इसका बाप बार बार मतलब उसकी आवाज़ इसके कानों में बजती थी और वो इसे कहता था कि तू मनहूस है, तेरा शौहर भी मनहूस था, उसकी जो मंजिल बनी है तेरी भी वही मंजिल होगी, और डार्कनेस जहाँ तू जाएगी वहाँ डार्कनेस और मौत फैलेगी, और कुछ भी नहीं, तू सिर्फ इसी के लिए बनी है। ये उस चीज़ से अंदर ही अंदर लड़ते हुए डार्कनेस से निकली अपने शौहर का सर लेकर, और इसे ऐसा लगता रहा कि इस दौरान ये देवताओं से लड़ती रही। इसके शौहर ने इसे गाइड किया कि ये तलवार है जिससे तुम देवताओं को मार सकती हो और गेट हेल में आके उसे मतलब छुड़ा सकती है, जो भी वट एवर शी थॉट। ज़ाहिर 6 साल हो गए सेक्रीफाइस खेले हुए, तो वो तलवार इसने रिट्रीव की। पहली गेम जिन्होंने खेली उन्हें पता है या जानना चाह रहे हैं, ये तलवार उसे मिली मतलब किसी हेल वगैरह से, किसी देवता के पास से मिली, और ज़ाहिर है इसका माइंड इसको गाइड करता रहा डिलियन की आवाज़ के थ्रू, इसके शौहर की आवाज़ के थ्रू। तो फिर इसने वो अचीव की, देवताओं को भी हराया, पिछली गेम का एंड हुआ। अब समझने की जो मेन चीज़ है वो साइकोसिस फीचर है, ये इसे बगौर देखें। Senua finds a unique courage to keep pushing forwards on her quest, no matter what. She sees the world differently to those around her and faces challenges others would avoid. When driven so strongly by one powerful purpose, she will do anything to rid the world of the darkness. This is her life's mission, and she will not stop until she fulfills her quest. My name is Eddie, and I have lived with psychosis for most of my life. To me, psychosis means living in a different reality, reality that isn't shared with other people. Often living with psychosis is dark and miserable. While experiencing psychosis, I've got to hear the voice of God, the opposite, seen and spoken with angels, and been to hell itself. Recovery college and peer support really did turn my life around. I thought I would never get better, and yet here I am. बेसिकली साइकोसिस जो है वो पेशेंट की रियलिटी होती है। भाई साहब पेशेंट है और किसी रिकवरी कॉलेज से ये बेहतर हो पाए हैं। इन्हें पहले लगता था ये ईवल वगैरह से भी बात कर रहे हैं, शैतान वगैरह से, देवताओं से, खुदा से, फरिश्तों से, मतलब जो भी जिस तरह का भी इनका बिलीव है, हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है। तो साइकोसिस का जो पेशेंट होता है बेसिकली वो झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन जो कुछ वो महसूस कर रहा होता है वो उसके साथ हो रहा होता है, वो उसकी रियलिटी होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिन भूत भी कह देते हैं इस तरह की चीज़ों को, लेकिन जिन भूत एक अलग मामला है और दिमाग का ये मसला, ये बीमारी एक अलग मामला है। तो भाई साहब तो रिकवर हो गए, इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुनी कि इनके साथ क्या हुआ, बेटर हो गए, अब बेहतर हैं और हमसे बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जिस तरह इमोशनली उसने बात शुरू की, आप पता लगा सकते हैं कि भाई साहब सच कह रहे हैं।
The things that Senua experiences in Hellblade are very similar to some of my own experiences. She lives in a reality that other people might find hard to understand. She sees significance in symbols, in meeting people, in all sorts of things that are going on around her. Senua is experiencing an altered state of reality which would be very hard to understand without having experienced it yourself or playing Hellblade. Lost soul who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Paul. Are you ready for what you will find here? It's difficult saying that it's an illness, that it's not real. Of course, to me, it is. And of course, to Senua, it is. And that's what's driving her to do these amazing feats of courage, to overcome pain and exhaustion, to do what she knows she must. All the rage. All the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. In Senua's Saga Hellblade 2, यहाँ पे आप गौर करें कि जब मैंने गेम के दौरान कहा था कि ये मर रही क्यों नहीं है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बड़ी चोटें लग रही हैं इसको और ये मर रही नहीं है और ये उस तरह से ज़ख्मी नहीं हो रही, तो वो इसीलिए क्योंकि ये इसके दिमाग में है। वो सारा दर्द, वो सारी थकान इसके दिमाग में है तो रियल की तरह, उसे फील भी हो रही है, तकलीफ़ भी हो रही है, वो थक भी रही है, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि फ़िज़िकली उतना नहीं थक रही तो वो बार बार उस चीज़ को ओवरकम कर रही है। और वो पेशेंट की रियलिटी होती है। भाई साहब बता रहे हैं कि ये तब तक नकली और मजाक और अजीब लगता है जब तक आपके साथ हो ना हो। अगर आपने एक्सपीरियंस किया साइकोसिस जैसे इस भाई साहब ने एडी ने किया तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, वरना आप हेलब्लेड खेलें और आपको पता चलेगा कि साइकोसिस क्या है। we tell the second part of the story of Senua, a Celtic warrior who, like Eddie, has experiences of psychosis, seeing the world in a unique way and existing in a reality unshared by others. At a surface level, this manifests for Senua in seeing things that others don't, hearing things that others don't, and having unique beliefs about the world. यहाँ पे आप देखें जो चीज़ें, मतलब वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जो औरों को नहीं सुनाई दे रही, ऐसी चीज़ें जो औरों को नहीं दिखाई दे रही। आपने सड़क पे कई दफ़ा देखा होगा, लोग कहते हैं वो देखो पागल जा रहा है, वो गालियाँ दे रहा होता है किसी को, या वो ख़ुद के साथ पैसों का हिसाब कर रहा होता है, या वो रोमांटिक बातें कर रहा होता है, या वो चीख रहा होता है, या वो बाकायदा तौर पे किसी बंदे से बहस करके झगड़ा करके मुसलसल जा रहा होता है, तो वो उसे फील हो रहा होता है भाई, वो उसे नज़र आ रहा होता है। मतलब बहुत सारे लोग पागलपन का दिखावा भी करते हैं, लेकिन जो रियली ऐसा आप बंदा देखते हैं ना कि यार वाकई पागलपन का मुजाहरा कर रहा है और ये पागल है, वो जो चीज़ वो जो बहस कर रहा है ना कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो किसी को लिटरली कह रहा है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो साइकोसिस का पेशेंट है, वो जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसकी रियलिटी है, आपके लिए सिर्फ एक पागल आदमी गुजर रहा है। My name's Paul Fletcher. I'm a psychiatrist and a professor of neuroscience at the University of Cambridge, and I've been working with the Ninja Theory team on Hellblade and other projects for several years now. I am a clinical doctor, but have also added research and teaching to my role. And in all three areas, I'm especially interested in the human brain and how it strives to make sense of the world, which is complex and changing all the time. The lake, like a mirror. You can see the reflection. Senua, like many people, experiences psychosis. Now, psychosis is not a diagnosis, although it is associated with a number of medical and psychiatric conditions. But ultimately, it's a loose description of a shift in one's experience of reality. What are you doing? Screams of the dead. There's something here. They are not. I need to find out what it is. They are. A person with psychosis might experience changes in their perceptions and their beliefs. For example, they might see or hear things that other people can't.
and they might come to believe things that are quite uncharacteristic for them. For example, they might feel that somebody, perhaps somebody even very close to them, is intent on trying to harm them. Now, it's very important to remember that this is not just a vague feeling or an imagination. To the person, it feels like their reality, just as everything around me feels like my reality to me. I, like many people, feel that in order to even begin to understand psychosis, we have to start with thinking about how the brain works in general, how it makes sense of the world around it. And when we do that, we're repeatedly confronted with evidence that actually it doesn't just rely on the evidence of our senses, but it actually relies on what it already knows, on its predictions, its anticipations, and its expectations. ताल्लुक इस सब का आपकी मालूमात से ही होता है, यानी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ नहीं होती कि जिसका आपको मालूम ना हो। आपने अगर मुन्ना भाई 2 देखी है, वो गांधी जी वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो उससे पूछता है गांधी जी की माँ का नाम गालिबन, तो बाकी सब जवाब तो वो दे देता है, लेकिन चूंकि उसने गांधी जी की वालिदा का नाम नहीं पढ़ा होता तो वो जवाब वहाँ पे नहीं देता, गालिबन वो लिखा हुआ ही नहीं होता गांधी जी की अम्मा का नाम। तो जो आपको पता है, जो आपके शऊर या लाशऊर में मौजूद है, साइकोसिस में आपको वही चीज़ें सामने आएंगी, वही दिखाई देंगी, उन्हीं बिलीव्स के हिसाब से मामलात होंगे। ऐसा नहीं है कि साइकोसिस का पेशेंट कोई ऐसी रिसर्च कर डालेगा या कोई ऐसा मामला अनकवर कर देगा जो दुनिया को मालूम ही नहीं है या उसको मालूम ही नहीं था, बल्कि जो कुछ उसके शऊर लाशऊर में मौजूद है, उसके दिमाग में मौजूद है, जो कुछ उसने आज तक सोचा है, देखा है, समझा है, जाना है, उसी से रिलेटेड मामलात होंगे। Your mind, your voices. Now that might seem like a defect. After all, why would we want to rely on what we already know rather than what the world is telling us? But if we did act simply as passive receivers, we would be completely swamped. We'd be like a newborn infant trying to make sense of the colours and shapes without any way of having a framework to try and understand those colours and shapes. Our senses are bombarded with information from the world that's rapid, it's intensive, it is noisy, ambiguous, unreliable. And if we were to try and make sense of that without imposing patterns and expectations, then it would be like trying to assemble a multi-dimensional jigsaw without knowing what the picture was on the box. Many of us think that the brain ultimately is an organ that makes predictions. It craves patterns and associations in order to make sense of the world. And without that, we are confronted with a feeling of uncertainty, of anxiety, of distress, even of fear. They're calling. Something is drawing near. Where do these predictions come from? Many of them are actually embedded in the structure of our brain, probably wired there by evolution. Many of them come from our earliest experiences as babies, trying to make sense of this new world that we're born into. Many come from our early childhood experiences, from what we learn from others and how we interact with others, from our parents, our teachers, our friends. We all have a feeling that we're directly in contact with an objective reality, but it's probably the case that what we experience as our constructed model of the world is a blend of the evidence of our senses, but also what we are predicting or expecting from the world. So this blend exists in a very fine and delicate balance, and the weighting of that balance probably varies a great deal across different individuals. But crucially, this balance is what determines how we experience and interpret and act upon the world. And some of them are embedded in shared experiences with others, our society, our culture, our arts, even our religions and our mythologies. So for the most part, this works very well for us and enables us to make sense of the world, but it's also, being a delicate balance, it can be shifted, and it's very easy, even under the most normal day-to-day circumstances, to deviate from objective reality.
A good example of this is the hollow mask illusion. All of us are familiar with a mask. We know that it depicts a face and that the inside is hollow. But when we see the mask rotating round and we see the hollow side, there is a deeper prediction, probably embedded in our brain, that facial features tend not to be hollow, that they stick out. And this deeper prediction can override our knowledge that the mask is hollow and make us actually perceive the face as sticking out at us. Despite what we know, the deeper predictions will override this. So for me and many in my field, perceptual illusions like this, which are very common, are really interesting because they tell us something fundamentally about how the brain is making sense of reality using its predictions. इस सीन में मैं भी थोड़ा सा ना, मतलब मुझे तो पता है साइकोसिस के ऊपर है, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद इस दफ़ा कुछ और मामला हो गेम में. तो जैसे ये उसको थॉर्गेस्टर को वहाँ से गिरफ्तार करती है ज़ख्मी करने के बाद और फिर उसके साथ आती है, यहाँ पर वो बस चलने वाला सीन होता है इसके बाद, लेकिन उससे पहले ये दिखाया होता है कि ये पानी से निकल के देख रही है और सामने थॉर्गेस्टर बंधा हुआ है गालिबन, और फिर उसके बाद ये उसको लेकर चल पड़ती है. तो फिर थोड़ा सा मुझे क्लियर भी हुआ कि नहीं यार, ये अपने पॉइंट के साथ ही जुड़े हुए हैं, साइकोसिस पे ही रखी हुई है इन्होंने गेम. But more than that, for me, it's very interesting because it begins to give us a sense of how psychosis might begin to emerge. Psychosis is this experience of an altered internal construction of one's reality. And it seems feasible that this is dependent upon this balance I've talked about between predictions and evidence. And it is probably the case that some people tend to weight their predictions more heavily. This, in many circumstances, is advantageous because it means that they can discern patterns and associations that perhaps other people can't. But if that balance was shifted further by different circumstances, then it may well be that they begin to construct a reality that doesn't accord with the world around them. What might cause that shift? Well, a number of things. It could be caused by stress, sleep deprivation. It could be caused by illness, neurochemical disturbances. It's also the case that our experience will change how we predict things. So a very profound experience, for example, of trauma, could powerfully change the way in which we make predictions about the world and shift us from this delicate balance into a state of psychosis. In the case of Senua, we know that from an early age she was able to discern patterns and associations that perhaps other people couldn't. And on top of that, her childhood and adolescence had a number of traumas in it. Her father was abusive and he accused her of being the cause of evil and darkness. Her mother, who had the same capabilities as she did, was actually sacrificed for the same reason. And in addition, her village was attacked by Vikings and her lover was brutally killed. And it's possible that all of these traumas would act on her natural tendencies to topple her into this psychotic experience that is depicted in Hellblade. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. In Hellblade Senua's Sacrifice, we find Senua discovering and understanding her experiences. They're relatively new to her, and the pain and torment feels at its most acute. Having travelled to a new place, with a mind full of her trauma and truth stories of the Vikings, she embarks on a journey of coming to terms with what has happened in her life. Ultimately, rather than finding the unachievable certainty of rescuing Dillion, she achieves certainty in the realization that Dillion is gone forever. She learns to accept his death, and in turn, her experiences of psychosis. Even in darkness, the wonder and ये सेनुआ जो है, सेनुआ सेक्रीफाइस यानी कि हेलब्लेड 1 का सीन है. मैं कल कह भी रहा था, वेल एक्सप्लेनिंग थी थोड़ी. गेम प्ले तो अच्छा था ही हेलब्लेड 1 का, लेकिन वेल एक्सप्लेनिंग भी थी इन दी एंड. इसमें चूंकि शायद उन्हें पता था कि लोगों को पता है कि साइकोसिस है, तो इन्होंने एंड में उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया. यहाँ पर ऐसे यकीन आ चुका था कि डिलियन को रिवाइव नहीं करवाया जा सकता, वो मर चुका है.
तो अब की बार उसे आवाज़ें कहीं और ले गई कि भाई लोगों की मदद करो और क्या बोलते हैं उनको, जिनको बंदी बनाया होता है यार, तो उनको छुड़ा लो। वो सारे बंदे जिनको पकड़ा हुआ स्लेव्स बनाया हुआ है स्लेवर्स ने, उन्हें छुड़ा दो। इस तरह करते 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 ये उस आदमी तक पहुंच गई थॉर्गेस्टर के बाप की तरह, जो जिसमें इसको अपना बाप नज़र आ रहा था कि ही वॉन्ट रीज़न। ये किसी बात में आपके साथ सही गलत की उसमें नहीं जाएगा, बहस में ही नहीं जाएगा, वो बस कहेगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ यही है। तो इसीलिए मेन विलन भी वही था, क्योंकि उसमें इसको अपना बाप भी देख रहा था। तो बहरहाल ये है कि जिसने 1 खेली है, ज़ाहिर है 1 मस्ट है, वरना तो शायद लोगों को पार्ट 2 बुरा लगे, कहीं यार ये क्या गेम बना, ये ग्राफिक्स अच्छे हैं लेकिन मज़ा नहीं है बाकी। तो उसके लिए 1 खेलना बहुत ज़रूरी है। The beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to... In Senua's Saga, we find Senua at a different place on her physical and mental journey. Empowered with the sense that she has overcome her own darkness, she's now compelled to follow a new quest, to save her people from that same darkness. You smell their fear. He's here. Death is coming. Look at the bones. Death is coming. Look at the bones. That's going to be you. That's going to be everyone. In Sacrifice, Senua's psychosis is acute and all-consuming. She is preoccupied and absorbed by her experiences. To some extent, she is enveloped and enslaved by the darkness. She cannot ignore her voices and visions. She's totally committed to the quest within her altered reality. In Saga, there has been some resolution to this. There's no miracle recovery. She still experiences the voices and visions. She still has a changed reality. But the balance of power has shifted. She is the one who is able to be in control. She's able to resist and challenge the voices. She's able to make decisions that much more clearly reflect her own goals. They see through your lies, and I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. And in addition, in Saga, she is able to encompass the reality of others. She sees them for the constructions that they are, and she is able to interact with them. And I think that's a very powerful change and a very important area to explore. They have lost everything. In Saga, we've had the opportunity to explore the next phase of Senua's mental health journey. One where she's come to a place of understanding, but where she and us as creators have new challenges to overcome. Where Senua's belief system will clash with that of others. Her experiences will play out in the presence of people who don't share her perspective. And where she feels a new sense of power in being chosen for the quest, but also a new weakness, bowing underneath the weight of responsibility that sits on her shoulders. Wait. In Saga, we have once again utilized binaural audio to bring Senua's voices to life. Her furies still travel with her, but their tone has changed this time. She continues to be haunted by her father, and she starts to feel the audible presence of Icelandic myth infecting her mind. That scream. That voice. Something dark, Senua. You need to go up there. Don't let them see you coming. You need to find out. Don't let the monsters find you. You can do this, Senua. To hear the world as Senua does, we spend time with people with lived experiences of psychosis, and also with Paul Fletcher. This made a strong basis of what it is to hear voices, what they say, how they sound, how they change or react to external stimulus. And this paired with all we learned from the first game, Hellblade Senua Sacrifice, led us to create Senua's own sonic version of reality. To me, it's a privilege to sit in a room to play our game, and as we progress, hear their comments, thoughts and suggestions. Each one provides a different perspective, and I find especially inspiring and humbling to hear from Eddie his own experiences. Especially, I find he has a way of putting very complex emotions, situations, in a very simple yet poetic way,
and it's really inspiring for me when I'm thinking in Senua's journey. We use binaural audio to bring 3D space in the headphones. This allows to experience the voice hearing and other sounds with a physical sense. Also extremely important is the performance of the voices, and for that we have been collaborating with Helen and Abby, our Furies. They are the most prominent voices of Senua. यार अजीन बाजियों ने बड़ा तंग किया है, वो आवाज़ें इनकी थी। चेक करो ना मेहनत कैसी है। लोग कहते हैं गेम है, गेम क्या होती है भाई? और भाई चेक करो क्या रिसर्च किया उन्होंने, क्या कुछ स्टडी नहीं किया, कौन से दुनिया के डॉक्टर प्रोफेसर उन्होंने ऑडियो मास्टर्स बुलाए हैं और फिर एक्टर्स उठाए हैं और फिर मुसलसल रिसर्च और पेशेंट्स के साथ बात करने के बाद उन्होंने उसी तरह की अल्टर्ड रियलिटी की एक गेम बनाई कि जो साइकोसिस का पेशेंट फील करता है। भाई सलाम है, हैट्स ऑफ। The way we perform is important as well, allowing for freedom, movement, creative input from Helen and Abby, and also important to have with them conversation and spend time talking about the journey of our character. There is a lot of time gone into experimentation, so every sound in the game is connected in some way with the emotion that Senua is experiencing as she travels through Iceland, from the sounds of the nature to some of the musical moments. A sign. Beyond of its uniqueness or not, I find that for me, something extremely important is to create a connection beyond the game. So in understanding Senua's own reality and going on a journey with her, I hope our players will understand better how people experience reality different, and in doing so, I feel we break those walls that keep us distant and lonely. My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. For Saga, in order to bring Senua's experiences of hallucinations to life, it was very important for us to listen to people's real lived experiences. It was then a case of thinking about how Senua's world and reality might look when faced with these types of examples. This would have been impossible without Paul Fletcher and amazing people like Eddie and Kathy, who've been so open and honest about what they have been and do go through on a day-to-day basis. I think it takes real strength to be able to talk about such personal things to a new group of people. On the visual side, we have lent into things like repeating fractal geometry shapes, cymatic patterns, with lighting and post-processing changes to all help reflect the current feelings of Senua. And hopefully, when combined with the audio and gameplay, the player will get a sense of what we are aiming to achieve. Dying right before your eyes, just like before. No, this cannot happen again. You couldn't do anything. We have to stop it happening. Face it. You need to face it. Focus. You need to look at it. In Sacrifice, we saw a story of Senua's suffering at the hands of her experiences. In Saga, we're telling a more nuanced story of the next step on her journey. One where she has found a greater balance, but where her experiences are just as strong. Where rather than being a victim to her experiences of psychosis, she is driven by them on a path that only she sees. Bringing sin with you. इस चाचे की आवाज़ जो है ना, ये बंदा मैंने देखना है, ये कौन है? तो फिर से उस भाई ने अभी बताया कि वो उस जर्नी पर उन आवाज़ों के वजह से उनकी ज़रिए से चल पड़ी और वो सिर्फ उसी को ही सुनाई देती है, तो वो उसी की रियलिटी है। और पिछली दफ़ा तो वो एक पर्पस लेके निकली थी ना, डिलियन को रिवाइव करने के लिए। इस दफ़ा तो बस वो जर्नी पे चल पड़ी। अब वो दुनिया में अच्छाई कर रही है एक तरह से। वो गॉडी जैसे, थॉर्गेस्टर के बाप जैसे और अपने बाप जैसे लोगों को ख़त्म कर रही है, मार रही है या उन्हें हरा रही है। अब वो इस जर्नी पर निकल चुकी है। The gods cannot be killed. One thing that I find very exciting in Saga is that there's an attempt to explore something that is really neglected in my field, which is the experience of a dual reality that some people have. People who have had Senua's types of experience have spoken to me about this feeling that they have their own reality, but they also recognize the reality that others experience, and it can be very confusing, it can be disorientating. And it's exciting to me that the game contains an explicit attempt to portray this experience of dual realities, and I think it'll be very interesting to see
how people respond to that. It's amazing what has been done and what's been portrayed. I think it's really difficult to turn words into what other people might be seeing, but I think I'm always blown away by what Ninja Theory come up with for their games, and I'm really stunned at the quality of, you know, the things that she sees and the sounds of the voices that she has. I think they're pretty realistic. She's getting closer. Yes, she can feel it. I hope that the game will help people who maybe don't understand psychosis or don't know very much about it to start with. I think by experiencing some of what they will do in the game, I think it brings to life a little bit of what it's like to have psychosis, and I think hopefully people will learn from it. Now I'm working as a peer support worker, and what that means is that in my case, in the job that I have in my role, it means that I go to see my people, to see my peers. We talk about how things have been. The way that Hellblade has captured the experience of psychosis is nothing like I've ever seen before, in terms of its realism, in terms of its fairness to people like me. They have put so much work, yaar. They have put so much work. ये आम बात नहीं है भाई. मैं कह रहा हूँ ये माइलस्टोन है तो ये माइलस्टोन है, और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है. गेमिंग कंपनीज लाइक यूबीसॉफ्ट दिन में 400 टाइटल बना रहे हैं, लेकिन वो काम इतना नहीं कर रहा है. अभी मैं एक दोस्त से भी बात कर रहा था कि यार असैसिन्स क्रीड मैं फ़ैन हूँ, मैंने अल्तायर वाली, फिर उसके बाद एसजी ऑडिटोरी वाले 3 पार्ट्स, उसके बाद ब्लैक फ्लैग, असैसिन्स क्रीड 3 मैंने सब खेली हैं. मतलब उसके बाद फिर मैंने ये सिंडिकेट वगैरह से छोड़ दी कि ये लोग गेम तो रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन पिछली गेम से ज़्यादा नेक्स्ट गेम में कोई इतनी खास तरक्की नहीं नज़र आ रही. अब आप देखें, इन्होंने 6 साल या 7 साल लगाए हैं. सेक्रीफाइस को आप देखेंगे वो कुछ और है, और मतलब विजुअली कह रहा हूँ, क्वालिटी वाइज कह रहा हूँ. आप सेक्रीफाइस को देखें, वो उस टाइम की सबसे अच्छी गेम है, और ये इसको देखें आप विजुअली और साउंड वाइज और इंटरेक्शन के हिसाब से. स्टोरी तो है ही ना, ये आज के हिसाब से 2024 के हिसाब से सबसे अच्छी गेम है. तो कंपनीज को ज़्यादा टाइटल्स रिलीज़ करने के बजाय रॉकस्टार और इनकी तरह, निंजा थ्योरी की तरह थोड़ा टाइम लगा के क्वालिटी का मामला करना चाहिए. अब तो AI का दौर आ गया, मेरे ख्याल से अब टाइम भी नहीं लगना चाहिए. तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एनलाइटनिंग और काफ़ी एक्सप्लेनिंग था. उम्मीद करता हूँ कि इस पर कोई कॉपीराइट वाला इशू ना है, वीडियो जो मैंने शेयर की है, क्योंकि इस तरह किसी और ने शेयर नहीं की, मैंने चेक किया है. तो मैंने कहा यार देखो, मेरी जो साइकोसिस की सारी इन्फॉर्मेशन है इस सब के ऊपर, वो इस गेम से आई थी. 2017-18 में गालिबन मैंने खेली थी, या 16 में खेली थी, भूल गया हूँ मैं. तो तब मुझे जो इसके बारे में मालूमात मिली थी, तब से मैंने हज़ारों लोगों को बताया कि भाई साइकोसिस एक ऐसी चीज़ है कि पेशेंट को महसूस हो रहा होता है. हमारे लोग कह रहे होते हैं कि ये जिन आए हुए हैं इसके ऊपर ना, अक्सर मामलात में, हमेशा नहीं. तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे. उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा. ये एक्सप्लेनिंग था काफ़ी. भाई सलाम है इनको, आप लोग की तरफ से भी कमेंट में एक सलाम आ जाए इनके लिए. इस तरह की मेहनत, इस तरह का मयार, इस तरह की एफर्ट अगर किसी भी काम में रहेगी तो वो कामयाब होगा भाई. बाकी गेम प्ले के मुतालिक मुझे भी थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ी सा बेहतर हो सकता था. उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा. आज गेम प्ले नहीं था, आज यही था, एक्सप्लेनेशन थी. सपोर्ट करें, साथ दिया करें यार. जो गलतियाँ वो बताएं, पॉइंट आउट करें, ताकि मैं उनको ठीक करूँ. मैं गलतियाँ पॉइंट आउट करने वाले जो सही में वाकई गलती निकाल देते हैं, कई लोग निकाल देते हैं. फैसल अपना, मेरे तो फ्यू ही व्यूअर्स हैं तो मुझे उनके नाम पता हैं. अपना सैफुल्ला साहब हैं, अदनान खान है, AKA आदि हैं, एक नूब के नाम से हैं, एक IO गेमिंग के नाम से हैं, और 2-3 और हैं, मैक्स प्रेन है, और मतलब 8-10 लोग हैं जो मुसलसल मुझे गाइड कर रहे हैं कि आप ये गलती कर रहे हैं या ये अच्छा कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का स्पेशल शुक्रिया. और बाकी भाई भी सपोर्ट शो करें. उम्मीद करते हैं फिर मुलाकात होगी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, सेनुआ को सलाम के साथ, अल्लाह हाफिज़.